vis-a-vis the value of buying the product from a big bazaar or from another person, and that is why he comes back to us. The tide is changing, and fair trade producers are now beginning to make their mark among many mainstream buyers as well. For many, this changing tide has enabled them to reduce their prices too. In corporate market, we are able to compete with pricing because we are producer ourselves. Hence, we are able to control the costing, we are able to control the quality. We have got our retail counters which are intended to take care of the administrative expense of the organization. So, the hard-earned money of these producers goes back fully to them. Unfortunately, the domestic market is not yet fully woken up to the fair trade call. I think it's very important that we should also sell our products in domestic market. So for example, fair trade is more known in Europe, and when you see the case of India, there is a lot of potential there. But of course there is also difficulty because consumer, if he is not aware, he doesn't know and they want always cheap. ऐसी बात नहीं है कि यूरोप में पैसा बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके जेबों में बहुत पैसा है। मार्केट यहाँ भी बन सकता है क्योंकि खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, पहनने वाले लोग ज़्यादा है। अभी पोजीशन ऐसी है कि कॉटन बाहर देश में जा रहा है और हमको ये देखना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ मार्केटिंग हो। What I find interesting as compared to my experience in the US is that whereas in the US we were explaining to people about the farmer somewhere else in the world who is producing a product that we're consuming here, in India that's not the situation. We're talking about people who are from the very same country and not very far away. So in that sense, I think consumers in India have an understanding about the need for fair trade in a way that's not the case internationally. The challenge in India is simply going to be around letting consumers know that they're actually empowered to make a difference. जब फेयर ट्रेड की बात करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करते हैं और कंज्यूमर को होता है कि चलो खरीदते हैं, पर कहाँ से, उसकी जगह अभी फेयर ट्रेड फोरम इंडिया ये नेटवर्क ऐसा काम कर रहा है कि जिसमें सभी 40 शॉप्स के अंदर सभी लोगों का चीज़ मिलेगा, ताकि अगर आप बम्बई में बैठे हैं या अहमदाबाद में हैं या दिल्ली में हैं, आपको पूरे इंडिया के जो फेयर ट्रेड प्रोडक्ट है हर एक शॉप में मिलेंगे। फेयर ट्रेड फोरम इंडिया जो है हाल में 102 मेंबर्स का एक नेटवर्क है और हमारे साथ करीब करीब 1 लाख कारीगर जुड़े हुए हैं। Other organizations are benefited from our activities, and at the same time we are really benefited from other organizations. Like I can say, these boxes made from handmade paper, recycled handmade paper. We are making this for Tara projects for their jewelry, and at the same time we are taking the papers from SKVIS, which is in Canning. This particular product is benefiting 3 organizations directly. तो फेयर ट्रेड में आज ऐसा हो रहा है कि सिर्फ कारीगर नहीं या ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट उसके साथ कारीगर के साथ साथ कंज्यूमर भी जुड़ रहा है, डिज़ाइनर्स जुड़ रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ रहे हैं, कॉरपोरेट्स जुड़ रहे हैं, और दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फेयर ट्रेड फोरम इंडिया कि किस तरह से ये पूरी एक विचारधारा को हम लोगों तक पहुंचा सकें। So the network is growing. And we can be a part of it.
रागिनी को ढूंढते हुए